This video will be studying about measuring devices, where we'll be converting galvanometer into ammeter and voltmeter. Okay. So the first one is conversion of galvanometer to ammeter. See, first look at what galvanometer is. Basically, galvanometer is a device that detects or that is used to detect a small electric current, or you can say measure its magnitude. Okay. Uh, Generally, the current and or you can say its intensity is usually indicated by a magnetic needle. Okay. See, this is a reading come out like this. This is a needle. Okay, with let's say currently pointing at 0. Right. So the magnitude is represented by this needle. Okay, it will move here and here. Okay. Now, if this needle moves up to here, okay, this is called full scale deflection or FSD. Okay, full scale deflection. Okay. And uh, the current that is producing full scale deflection is called IG, represented by IG. Okay. And the resistance of galvanometer is represented by G. See, these things will require this in this conversion. Okay, so I'm telling you the terminology. Okay, now पहला पहला है conversion of galvanometer to ammeter. होता कैसे है ये? Basically, galvanometer को ammeter में convert करने के लिए basically it is connected by a low resistance parallel to the coil of the galvanometer, and this low resistance is called shunt. Okay, let's see. I'm drawing a circuit. Okay? मान लिया galvanometer लगा, रीडिंग दे रहा है, इसका रेजिस्टेंस क्या करेंगे? अगर इसको एमीटर हमें बनाना है, क्या करेंगे? इसी के पैरेलल में एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वो कहते हैं शंट। वैल्यू क्या होती है? काफ़ी लो। तो एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया, इसकी वैल्यू क्या है? एस। ठीक, अगर मान लिया आई करंट आ रही है, ठीक है, तो अब यहाँ से जो करंट पास करेगी गैल्वेनोमीटर से, क्या होगी? आई जी होगी ऑब्वियसली, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। तो यहाँ से क्या जाएगी? आई माइनस आई जी। ओके, एंड इट यहाँ से भी आई माइनस आई जी एंड फाइनली आई निकल जाएगी। So, in Wheatstone, oh sorry, you know that the potential difference across this means if we move across the galvanometer or across the shunt, okay, it will be same. That means Ig into G, since resistance of galvanometer is G, is equals to I minus Ig to shunt resistance S. From here you will get S is equals to Ig into G upon I minus Ig. का मतलब वो वैल्यू होगी शंट रेजिस्टेंस की, वो क्या होगी? ये हो जाएगी। ठीक, और अब ये जो होल सेटअप है ना, इसको ये कहलाता है एमीटर। ठीक है, दिस होल सेटअप इज कॉल्ड एमीटर। तो अगर आपको एमीटर का रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा? G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। वाई? बिकॉज these two are connected in parallel. Okay, so equivalent resistance will be GS by G plus S. This will be your resistance of the emitter and this is your shunt resistance. Okay. Now the second one is conversion of galvanometer to voltmeter. See, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसके सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। मतलब सर्किट आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो आर लगता है ये काफ़ी हाई वैल्यू हो जाती है। ठीक, और ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा है। ओके, तो यहाँ से करंट आई जी आई, आई जी आई, आई जी पास हो गई।
ये पूरा सेटअप क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर का सेटअप। ओके, तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई जी, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर प्लस। ओके, और यही क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, a galvanometer has 30 divisions. Okay, galvanometer has 30 divisions. Okay, has and has current sensitivity 20 microampere per division. Let's say. And also it has resistance equals to 5 ohm. Okay, now first question is, how will you convert it into ammeter measuring current up to 1 ampere? Okay, the second question is, how will you convert it into voltmeter measuring voltage up to 1 volt? Okay, this is for voltmeter, this is for ammeter. Okay, ठीक, नाउ पहला केस क्या हो जाएगा, जी गैल्वेनोमीटर में क्या है 30 डिवीजन है और पर डिवीजन करंट कितनी है 20 माइक्रो एम्पियर, तो टोटल करंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे फ्लो करेगी वो क्या हो जाएगी, आई जी इक्वल टू 20 into 30, दैट इज 600 माइक्रो एम्पियर। ठीक, एंड योर जी इज गिवन, I think G is given 25, sorry, it is not 5 ohm, it is 25. G is given as 25 ohm. Okay, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि सी एमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, शंट रेजिस्टेंस लगाना है पैरेलल में। ठीक है, तो बस आप उसी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो और लिख सकते हो कि दिस शंट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल आई जी इंटू जी, दैट इज 600 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू जी अपॉन I minus Ig, that is 1 minus 6 into 10⁻⁻⁴. Why 1? Because the net, it should read ammeter measuring value up to 1 meter. Okay, so on solving this you will get I think 0.015 ohm. सॉल्व कर लेना करके आप, ये आपकी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। बस ऐसे ही आपको पहला वो वोल्ट मीटर वाला कर देना, वोल्ट मीटर में क्या करते हैं सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई जी आर प्लस जी। आपको यहाँ पे V की वैल्यू पता है, ठीक है, आई जी पता है, जी पता है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी, आर, यहाँ से हो जाएगा आपका V अपॉन आई जी माइनस जी इज इक्वल्स टू आर। ओके, तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, सबकी वैल्यू V यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, आई जी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक इट विल बी 6041 ओम। दिस शुड बी the resistance that should be connected in series with it. Okay, one more note you should write, that deflection of a galvanometer is directly proportional to current flowing through its wire. Okay, means deflection is directly proportional to current. Why? You know, because obviously ज़्यादा deflection होगा तो क्या होगी, ज़्यादा current flow होगी। ठीक, तो ये हो गया। Okay, now in the next video we'll study about potential gradient and potentiometer. Thank you.